The lecture is of conclusion of the chapter, conclusive lecture for this techniques in chemistry. Hope you are getting my voice and picture clarity well. Okay, so we are here with last lecture for the chapter, basic analytical techniques in chemistry, or probably or mostly the last lecture for the 11th standard chemistry from part 1. So it's a small topic is remaining from this chapter, and that is nothing but you can say the chromatography technique, what we are discussing. Yesterday already we have discussed some part of this chromatography technique. So let's have a bit recap of the topic, what we are seeing till that, and what we have to discuss here in the concluding lecture for this chapter. The name of the chapter is Basic Analytical Techniques in Chemistry. And we know it very well, when we came across the chemistry, we need to many basic techniques and principles for the analysis of the substances, because without the analysis, we can't go ahead here in the chemistry. So in second chapter, we are seeing the principles related with basic analytical techniques. And here in the chapter, we are discussing basic analytical techniques actually used. Or as I have discussed, even forget about the science, forget about the chemistry, but in our daily routine life, as a human being, we are using many analytical techniques for many household things. Here we are discussing chemistry. Basically, when we come across number of chemical substances, we need to analyze them. We need to separate out the substances. We need to purify the substances. And for that, we need basic analytical techniques. So here in the chapter, we have discussed filtration, which is a very simple or common technique, what we have discussed here in the chapter. Then second, we have seen that is, you can say, crystallization and fractional crystallization. Third, we have seen distillation and fractional distillation process. Fourth, we have seen extraction process, the solvent extraction process. And last lecture, we have discussed fifth, that is called as chromatographic technique. Even, sorry, here, chromatographic technique is that. So this is, you can see here, almost sixth technique, basic analytical technique, which is used in the chemistry. Or as I stated, though the principles, the technique and science of this chromatography are different, with that, these technique, these principles already have entered in our home. हमारे घर के अंदर already वो आ चुके हैं. Chromatography के applied part और applied चीजें हमारे घर के अंदर होती है, खास करके हमारे घर के अंदर जो water purifier होते हैं, वो सारे water purifier के अंदर chromatographic technique, right? Chromatography के principles use किए जाते हैं. तो हम यही लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, that is what is this chromatographic technique. Chromatographic technique consists of two things. Chromatographic technique consists of two things. Number one is a stationary phase. Number two is nothing but the moving phase. Here, substances are separated by using stationary phase and moving phase. Now, what is this stationary phase and what is this moving phase? We'll comes to know when we discuss in detail what are the types of chromatography and how that works. So we have seen chromatographies are of different types. Chromatographies are different types, and even based on the principles, we have first category called as adsorption chromatography. Adsorption chromatography, and second is nothing but the chromatography. So last lecture में हमने ये जो adsorption chromatography है इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है? अभी इस adsorption chromatography के दो टाइप्स होते हैं. Adsorption chromatography के दो टाइप होते हैं. So here मैं लिखता हूँ number one, that is column chromatography. Column chromatography. और दूसरा जो टेक्निक हम बात करते हैं, that is nothing but you can say TLC, thin layer chromatography. That is called as TLC, thin layer chromatography. These are the two types of this adsorption chromatography, and the last is nothing but the partition chromatography. Already, कल के lecture में हमने column chromatography क्या होता है इसे हमने discuss किया हुआ है. So I think everyone amongst us knows well. If you have any doubt, difficulty, please let me know, because this is the conclusive lecture for the chapter topic. Once again, let's come to this. What is this column chromatography? We'll have a bit revision of that, and then we'll enter into the TLC. Column chromatography. See, this is the diagram already हमने कल discuss किया था. मैं उसको आपसे एक बार discuss कर रहा हूँ. हम जब laboratory में experiment करते हैं, खास करके column chromatography laboratory में हम बना सकते हैं. दुर्भाग्य से आप लोग कोविड के कारण कॉलेज नहीं जा पाए, अदरवाइज ये सारा आपने प्रैक्टिकल लैब में आपने किया होता था और आप
अच्छी तरह जानते थे इसके बारे में। सो अब देखिएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर apparatus क्या होता है कि we have the burette, ये burette है, we need the burette having here can say we can open it or close it. Then this burette is filled with a suitable substance. So this suitable substance may be charcoal, maybe silica gel, maybe agar-agar gel, maybe artificial reagents. There are many substances which we can use. So this burette is filled charcoal, maybe with agar-agar solution, maybe with silica gel, maybe with some other reagents, artificial reagents that is over here. And this act as a stationary phase. Whereas this burette is hung with stand over here, and here is the container kept below this burette, and here cotton is plucked at the bottom end of this chromatograph. Now, what happens over here? Here we are dealing with the separation of the substances, purification of the substances. Suppose we have the mixture of 2 or 3 substances. यहाँ पे देखते हैं this is the container जिसके अंदर A, B, C, D ऐसे substances जिसका mixture है, और ये सारे metal ions है, हमें उन्हें separate out करना है. तो हम क्या करते हैं? ये जो solution है, ये solution हम इसके ऊपर pour करते हैं. So इस burette के अंदर यहाँ से pour करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं. Now ये जो mixture है, ये mixture जैसे इसके अंदर हम put करेंगे, pour करेंगे, it will come down. It will come down. It will percolate like that. While it is coming down, this mixture being consist of substance A, B, C, D, these may be metals or maybe some other substances. Take for example, these are the metal ions. So A, B, C, D, these are the substances, and every substance has different adsorption power, different rate of adsorption. Or adsorption क्या होता है? मैंने कल ही बताया कि collection of one substance on the surface of another substance is called as adsorption. जैसे कि मैंने बताया था कि हमें बोर्ड है या वॉल होता है हमारे घर के, उस वॉल के ऊपर डस्ट आ जाता है, तो डस्ट वॉल के ऊपर यहाँ पे चिपक जाता है. सो ये क्या होता है कि डस्ट सरफेस के ऊपर कलेक्ट होता है because of some attractive forces between the particles which are present on the surface, and that is nothing but the adsorption phenomenon. Absorption अलग होता है, we have seen that. So every substance has different rate of adsorption. तो A adsorb यहाँ पे होता है, C adsorb यहाँ पे होता है, D adsorb यहाँ पे होता है, E होता है यहाँ पे, B यहाँ पे होता है. जिसका adsorption rate ज्यादा है वो सबसे पहले रहेगा, और जिसका adsorption rate सबसे कम है वो सबसे नीचे आएगा. So we get a layer of the substances. Sometime it may show a color, otherwise we have to add the substance which will show the colors, so that we can say we can see with the naked eye. So it becomes very easier for us to perform the experiment and all. So we got different layers. ये हम लोग ऐसे layer मिलते हैं A, B, C, और ये किस कारण से मिलते हैं? Because differential adsorption rate. Every substance has different rate of adsorption. That's why A being highest rate of adsorption is adsorbed over here. C being less than that, it comes down and adsorb over here. D having less than that, it comes more down and adsorb over here. So onwards we have the sequence, and accordingly all the substances are here in the layered form. Now we'll add eluent. There is another substance what we add here in this one. When we add this another liquid, which is called as an eluent, and that the choice of the eluent depends upon the substances what we have to separate out. When we pour the eluent, this eluent will come down, which is called as a moving phase. As we have seen, chromatography के अंदर एक होता है stationary phase, जो कि हमने इसके अंदर charcoal, agar-agar solution, silica gel, इस टाइप के substances भरे हुए, which are acting as a stationary phase, जो move नहीं करने वाले, fix होता है. That's why they are called stationary phase. And this is the moving phase. Moving phase के अंदर यहाँ पे eluent होता है. हम जो ऊपर से liquid यहाँ पे जो बाहर करेंगे, वो liquid eluent है जो इसको move करेगा, लेके आए, and that is continuously moving. And that's why it is called as a moving phase. So every chromatography has two things: stationary phase and moving phase. तो column chromatography की जब बात करते हैं तो उसके अंदर charcoal, agar-agar, these are called as you can say stationary phase. They are not going to move. Whereas the eluent, what we are going to part, this eluent is going to continuously move, and that's why that is called the moving phase. Now, when it is part, this eluent will come down slowly. Being it's a moving phase, we add it continuously, and it will come down. The way it comes down, it will bring down the substances in its own sequence, whatever is already they are kept here in that manner, that way, they will come down accordingly. So they will continuously come down. If they are colored, we'll observe the tracks of color just moving down. So when this B comes over here, we'll collect in one of the receiver, and we'll continuously add the eluent. When all B is removed, we'll remove this container, we'll put here another or second container. We'll collect E in second one, D in third one, C in fourth container, A in fifth container. So onwards, we'll collect all the substances in different containers. And that is nothing but the separation of the substances. So here,
basically we were having the picture of the solutions and that is separated here in this column chromatography. In this column chromatography, here is the stationary phase and event is the bloom phase, which will separate the substances. The principle, main principle here in this separation of the substances is different rate of adsorption. I have repeated many times. These substances are separated on the basis of differential adsorption rate. That means every substance has different adsorption power. What is adsorption? Collection of one substance on the surface of another substance is called as an adsorption. So A has more adsorption power, C has less than that, these have more less than that, so onwards. The idea. And they are separated. So this is the technique which is used in column chromatography. Even हमारे घर के अंदर जो प्यूरिफायर यूज किए जाते हैं वो सारे प्यूरिफायर के अंदर भी ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही यूज किया जाता है और जिसके आधार पर हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई भी कर सकते हैं. देयर मे बी सम टाइम वी separate out the impurities or sometimes there may be a mixture of substances what we separate it out. So different substances collected in different receiver or container and we can have the separation of the substances by this method called column chromatography. Hope so everyone got what is chromatographic technique and especially what is column chromatography. And this every chromatography has this stationary phase and moving phase. And the principle used is a differential adsorption rate. That's all for this column chromatography. Let's move to second type. When we are talking about second type, let's look at the TLC. TLC is a second type of chromatography. That is adsorption chromatography. Okay, so let's move to that. So if is there any difficulty out, please let me know. Now, we'll be having just a tabular format where we have the types of chromatography. So you can say types of chromatography. Types of chromatography. Okay, अब देखिएगा इसके अंदर दो मेन टाइप होते हैं. Number one, that is adsorption. Adsorption chromatography, and here is the partition chromatography. Partition chromatography. When we talk about adsorption, इसके अंदर दो होते हैं. Number one is column chromatography, and number two is nothing but you can say TLC. And when we talk about the partition chromatography, it is nothing but only one having that's called paper chromatography. Paper chromatography. So these are the types. So we have seen this chromatographic technique in which there is a stationary phase and moving phase, and it is classified in two categories. That is adsorption chromatography and partition chromatography. Adsorption chromatography has two types again, that is column chromatography and thin layer chromatography. And partition chromatography consists of paper chromatography. We have already the column chromatography discussed here. Now we are going to discuss this second, that is TLC, thin layer chromatography. This technique is very especially for separation of the substances qualitative. See, quantitative separation and qualitative separation. It's very important that when we talk about the qualitative, which substances are present in that is called as qualitative. मतलब हमें जो sample दिया हुआ है उसके अंदर कौन से substances present है, that is called as you can say qualitative. Or how much amount of that particular substance is present, that is called as quantitative. So this TLC is related with qualitative analysis. मतलब हमारे पास जो mixture दिया जाएगा उसके अंदर कौन से substances present है ये find out करने के लिए हम लोग TLC का ज्यादा यूज करते हैं, that is thin layer chromatography. दुर्भाग्य से आप लोग इस साल लैबोरेटरी में नहीं जा पाए, अदरवाइज ये TLC का एक्सपेरिमेंट तो हर बच्चों को करना पड़ता है. बहुत इजी और मस्त है एक्सपेरिमेंट. वो एक्सपेरिमेंट करते थे तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आता था, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल, मतलब आफ्टर ऑल इट्स प्रैक्टिकल व्हाट वी डू and it becomes much more easy than the theoretical part what we discussed. But let's see, it's very easy. Even we'll get well with theoretical part. Thin layer chromatography. पहले मैं chromatography क्या है बताता हूँ, फिर उसका प्रिंसिपल और फिर वो किस तरीके से काम करता है वो आप देखें. So let's move on to this thin layer chromatography, TLC. TLC के अंदर क्या होता है? See, we are here. This is a glass plate. This is a glass plate. एक glass का plate होता है छोटा सा जो almost 6 centimeter long and 2 centimeter या 3 centimeter चौड़ा, ऐसा ये glass plate होता है.
This glass plate is taken, हो सकता है कि 2 mm का वो thickness उसका होता है, so it has a height, length, width like that. So this is the glass plate having almost 6 to 8 centimeter length. ये 2 centimeter होता है और उसका thickness होता है that is 2 mm के आसपास उसका होता है. Now this is taken and this is deep into silica gel. Silica gel के अंदर इसे डुबाया जाता है. अभी आप शायद ये जानते हो, हम लोग कुल्फी खाते हैं, कुल्फी समर के दिन चल रहे हैं. दुर्भाग्य से इस साल हम लोग ये कोविड के कारण और ये लॉकडाउन के कारण हम लोग उतना उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, लेकिन कुल्फी हम बचपन से खाते हैं. हम जब कुल्फी वाले के पास जाएंगे, कुल्फी वाला अगर सिर्फ कुल्फी निकाल के हमें देगा तो मजा नहीं आता है ना. कुल्फी वाला क्या करता है, कुल्फी निकालने के बाद उसके पास जो दूसरा एक सोल्यूशन होता है, सिरप होता है, उसके अंदर डुबो के देता है. फिर एक मजा आता है, उसका एक मस्त लेयर तैयार होता है उसके ऊपर, और वो खाने में बहुत मजा आता है. जिस तरीके से कुल्फी उसके अंदर डीप करने के बाद, इम्प्रीग्नेट करने के बाद उसके ऊपर लेयर आता है, वो आइसक्रीम का लेयर आ जाता है या कुल्फी का लेयर आ जाता है मस्त. उसी तरीके से ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, ग्लास प्लेट है, इसे सिलिका जेल में डीप किया जाता है, इम्प्रीग्नेट किया जाता है. जैसे सिलिका जेल के अंदर उसे हम लोग ऐसा डीप करेंगे कंटेनर के अंदर, तो उसका एक थिन लेयर उसके ऊपर तैयार हो जाता है. सो इसके ऊपर पूरा प्लेट के ऊपर एक थिन लेयर ऐसा तैयार हो जाता है, सिलिका जेल का लेयर आ जाता है, सिलिका जेल का लेयर आ जाता है. So this is the glass plate which is impregnated with silica gel. जिस तरीके से कुल्फी डुबाते हैं उस तरीके से डुबाया जाता है. या फिर दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको कि ज्वेलरी की बात आती है. हमारे कई सारे लोग, बच्चे, लड़कियां भी ज्वेलरी यूज करते हैं. गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी आपने सुना होगा, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी करते हैं. तो होता क्या है कि ज्वेलरी दूसरे किसी मेटल की होती है, शायद कॉपर या फिर कोई एलॉय होगा मेटल का, उसका वो ज्वेलरी बनता है. और उस ज्वेलरी को कैथोड बना के गोल्ड के सॉल्यूशन में डीप किया जाता है कुछ समय. गोल्ड के सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो उसके ऊपर गोल्ड का यूनिफॉर्म लेयर आ जाता है. हम जो ज्वेलरी यूज करते हैं उसके ऊपर यूनिफॉर्म लेयर आता है. मानो कि ये पेन है और इस पेन अगर किसी मेटल का है और उसे गोल्ड के सॉल्यूशन में डुबाते हैं, कैथोड बना के, तो कैथोड के ऊपर क्या होता है, मेटल का डिपोजिशन होता है यहाँ पे. तो इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म लेयर तैयार हो जाता है गोल्ड का. अब जैसे कहते हैं हम लोग गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, अंदर से अलग मेटल है, ऊपर से गोल्ड का प्लेटिंग आता है. तो उसी तरीके से एक ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर सिलिका जेल का कोटिंग आ जाता है, उसे इंप्रेग्नेट किया जाता है जिस तरीके से कुल्फी हम देखते हैं उसी तरीके से, और इसके ऊपर पूरा सिलिका जेल का ही आ जाता है. सो सिंपली वी कैन से दिस इज ग्लास प्लेट. ओके, दिस इज ग्लास प्लेट. और इसके ऊपर जो लगाया जाता है सिलिका जेल, सिलिका जेल, ये इसके ऊपर यूनिफॉर्म लेयर आ जाता है. नाउ ये जो ग्लास प्लेट है विच इज इंटीग्रेटेड विद सिलिका जेल, जिसके ऊपर एक प्रॉपर कोटिंग आ जाता है. ओके, इसे क्या जाता है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर, दिस इज द ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस. ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, दैट्स कॉल्ड बेस लाइन, जिसे बेस लाइन कहा जाता है. सो दिस इज नथिंग बट यू कैन से बेस लाइन. तो ये एक बेस लाइन बनाया जाता है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बिलो, एंड उसे बेस लाइन कहा जाता है. नाउ ये जो ग्लास प्लेट है इंप्रेग्नेटेड विद सिलिका जेल इज केप्ट इनटू अनदर कंटेनर. सो सपोज दिस इज द कंटेनर, और इस कंटेनर में वो सिलिका ये प्लेट रखा जाता है. तो अभी देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं लाइक दिस वन. ओके, सो ये प्लेट रखा गया, इस तरीके से प्लेट रखा गया. अभी यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर उसका बेस लाइन पुट किया हुआ है, 2 सेंटीमीटर. यही प्लेट है, मैंने बस कंटेनर के अंदर रखी, और इस कंटेनर के अंदर दूसरा लिक्विड होता है, दिस इज कॉल्ड एज मूविंग फेज. दूसरा होता है मूविंग फेज. तो इसके अंदर दिस सिलिका जेल इज एक्टिंग एज स्टेशनरी फेज. हम जो बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर स्टेशनरी फेज होता है. तो सिलिका जेल जो इसके ऊपर पूरा डिपॉजिट किया हुआ है, दैट इज एक्टिंग एज अ स्टेशनरी फेज, एंड दिस लिक्विड इज नथिंग कॉल्ड एज मूविंग फेज. And the choice of liquid depends upon the substance what we have to separate out. So this is taken as moving phase. Then the mixture, what we have to separate out, so that mixture is spotted at this baseline using a capillary. मुझे ड्रॉप जैसा होता है ना, या ड्रॉपलेट शायद आपने देखा होगा, ड्रॉपर देखा होगा आपने. तो मिक्सचर जो है जिसको हमें सेपरेट आउट करना है, इट्स अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो मिक्सचर का जो ड्रॉप है जिसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस का मिक्सचर है, वो यहाँ पे बेसलाइन को यहाँ पे लगाया जाता है यूजिंग अ ड्रॉपर. तो ड्रॉपर से ये लगाया जाता है, यहाँ पे एक ड्रॉप ऐड किया जाता है, उसके ऊपर ड्रॉप दिया जाता है यहाँ, एंड देन इट इज केप्ट हियर इन दिस. सो बीइंग दिस इज द फेज, ये जो लिक्विड होता है बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन, दिस लिक्विड मूव्स, यहाँ पे इसके ऊपर मूव होता है.
this liquid moves over here. So suppose this is the line where a liquid, ये जो stationary moving phase है वो यहाँ पे आ जाता है, and ये जो spot है वो उसी तरह से move करता है. Suppose ये इसके अंदर 2-3 substances है, तो एक spot यहाँ पे आ जाता है, दूसरा spot यहाँ पे आ जाता है, 3 होंगे तो शायद तीसरा और कहीं आ जाए. So this is, you can say, substance 1, substance 1. Suppose this is called as substance 2. So these are the substances separated from you. So this is substance 1 and this is substance 2. So if we are having the mixture of 2 substances, then 2 substances are separated over here. Now this is called as, you can say, differential adsorption. Basic technique और principle वही, but यहाँ पे हमने column chromatography use किया था, अभी हम लोग thin layer chromatography use करें. Thin layer क्यों? This is the glass plate which is impregnated with silica gel. Silica gel से impregnate किया गया, तो silica gel का एक uniform layer उसके ऊपर आ जाता है, जो हमारा स्टेशनरी फेस करके काम करता है. 2 सेंटीमीटर नीचे से यहाँ पे एक बेसलाइन ड्रॉप किया जाता है, जिस बेसलाइन के ऊपर ये मिक्सचर जो है उसका एक ड्रॉप दिया जाता है, जो मिक्सचर हमें सेपरेट ड्रॉप करना है क्वालिटी, उसका ड्रॉप यहाँ पे किया जाता है. इसे इस कंटेनर में रखा जाता है जिसके अंदर ये मूविंग फेज है, सॉल्वेंट जो मूविंग फेज है, जो कैपिलरी एक्शन के कारण मूव करेगा. कैपिलरी एक्शन मतलब क्या होता है कि आपने फिजिक्स में तो देखा है कि व्हाट इज कैपिलरी एक्शन एंड हाउ इट वर्क्स, बट हमारे डेली रूटीन में आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि हम पेपर की बात करें. हमने एक पेपर लिया और थोड़ा सा पानी में उसका एक नीचे का एंड हमने अगर डुबो दिया पानी में, तो पानी कैपिलरी एक्शन के कारण पेपर के ऊपर आ जाता है, isn't it? मतलब the water moves down, moves up. Yeah, water move करता है because of capillary action. पूरा पेपर वेट होने तक वाटर ऊपर आता है. That is what is nothing but the capillary action. तो उसी तरीके से यहाँ पे जो मूविंग फेज है वो यहाँ पे मूव करता है, और ये मूविंग फेज जैसा मूव करेगा, सिलिका जेल विल एक्ट एज एडसॉर्प्शन. और ये जो सब्सटेंस यहाँ पे हमने दी है, दिस सब्सटेंस हैज डिफरेंट एडसॉर्प्शन पावर. तो सब्सटेंस मूव करेंगे और अलग-अलग जगह एब्जॉर्ब होंगे. सो दिस इज हैविंग मोर एडसॉर्प्शन देन दिस वन, and these substances are separated. Suppose this is A substance, this is B substance, या substance 1 और substance 2, they are separate. 2, 3, 4 कितने भी मिक्सचर हमारे पास होंगे तो उतने स्पॉट हमें दिखाई देंगे. अब ये जो स्पॉट आ चुके हैं, दिस स्पॉट मे बी कलर्ड और मे नॉट. अगर ये सारे स्पॉट कलर्ड है तो हमें नेकेड ऐसे दिखाई देंगे. अगर ये स्पॉट कलर्ड नहीं है तो हो सकता है कि इनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं. सो हमें ये प्लेट यहाँ से निकाल के अगर यूवी लाइट के नीचे पकड़ेंगे तो हमें स्पॉट कलर्ड दिखाई देते हैं. सो अगर सॉल्यूशन पहले से कलर्ड है तो 2 अलग-अलग कलर्ड स्पॉट हमें दिखाई देंगे इफ द मिक्सचर इज ऑफ 2 सब्सटेंसेस. अगर ये कलर्ड नहीं है तो इस प्लेट को यूवी लाइट के नीचे दिखाया जाता है, अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे दिखाया जाता है, जिसके कारण ये जो सब्सटेंसेस इनके अंदर अगर फ्लोरोसेंस कैपेसिटी है तो हमें फ्लोरोसेंस दिखाई देते हैं. अगर नहीं है तो एक ड्रॉप के अंदर ऑलरेडी कुछ ऐड किए जाते हैं सब्सटेंसेस व्हिच विल गिव कलर टू दैट सब्सटेंस. सो जिसके कारण हमें कलर स्पॉट दिखाए. सो दैट इज व्हाट वी कैन सेपरेट आउट देम, एंड दिस इज नथिंग बट द सेपरेशन दैट इज थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी व्हिच इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव separation of the substances or mixture of 2 or more substances. That's all for the TLC, thin layer chromatography. Hope everyone got it. Chromatography has 2 types, adsorption and partition chromatography. Adsorption chromatography has 2, that is column chromatography and TLC. Column chromatography is with burette, जो हमने देखा, और water purifier का होता है. Thin layer chromatography is used for, you can say, ये quality as well as quantity के लिए यूज किया जाता है, and this is mainly used for the qualitative analysis. कौन से substances mixture के अंदर present है ये find out करने के लिए ये यूज किया जाता है. So that can be detected for thin layer chromatography. Just the small points. What is thin layer chromatography? Consists of a glass plate, and this glass plate is impregnated with silica gel, जिसका एक thin layer उसके ऊपर आ जाता है, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नीचे से यहाँ पे एक बेसलाइन ड्रॉ किया जाता है, और ये दूसरे कंटेनर में डुबोया जाता है, जिसके अंदर ये जो मूविंग फेज है, सॉल्वेंट है, वो 2 सेंटीमीटर से नीचे होता है ताकि वो लाइन में हम देख पाए. एंड द मिक्सचर व्हाट वी हैव टू सेपरेट होल वो यहाँ पे ड्रॉपर के साथ यहाँ पे स्पॉट दिया जाता है. जैसे हम ये असेंबली के अंदर रखेंगे, दिस मूविंग फेज विल मूव, एंड ड्यू टू द डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस, दिस स्पॉट विल बी सेपरेटेड. दिस इज द फ्रंट ऑफ द मूविंग फेज. जो मूव हो रहा था वो यहाँ तक मूव करता है, एक 2 मिनट के बाद, 5-10 मिनट के बाद, एंड दीज आर द सब्सटेंसेस सेपरेट. Most of time these substances may show the color or colored spots, or if not, then that is this plate is also under the ultraviolet light, because of which if they have the fluorescent material it will show a colored spots. And that is how we can separate out these 2 substances. The mixture has these 2 substances. If we observe 3 spots, then you can say that it is having 3 substances. 4 spots, then we can have the 4 substances, so on. So that is what we can say here. So there are different amino acids which we can separate out by using this TLC, thin layer chromatographic technique.
Clear with this? So that is the part of this adsorption product. Now let's move to next and last part. That's called partition chromatography. So let's move for the partition chromatography. Is this one. Okay. Now, when we talk about the partition chromatography, so what is here in this partition chromatography? So partition chromatography का basic principle में है difference in parts need. So here दोनों फेज स्टेशनरी फेज की बात करते हैं और हम लोग मूविंग फेज की बात करते हैं, दोनों लिक्विड फॉर्मेट में। अभी तक इसमें क्या हो रहा था, स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड फॉर्मेट में था, कॉलम क्रोमैटिक की बात करेंगे, टीएलसी की बात करेंगे तो स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड फेज में था और मूविंग फेज हमारा लिक्विड था, फ्लूइड था। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी के अंदर उसी का एक बेस्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड पेपर क्रोमैटोग्राफी। इसके अंदर दोनों भी फेज, स्टेशनरी फेज भी और मूविंग फेज भी, दोनों लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं। तो पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर उसका बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। तो क्या है इसका? सपोज हमारे पास एक पेपर है, सो दिस इज द पेपर, पीस ऑफ पेपर यू कैन से, ये पेपर का पीस है एंड इसके लिए एक पर्टिकुलर पेपर लगता है। द पर्टिकुलर पेपर वॉटमन वन नाम का एक पेपर होता है, जैसे कि हम लोग पार्चमेंट पेपर, फिल्टर पेपर, टिश्यू पेपर, ऐसे जैसे हम देखते हैं उसी तरीके से वॉटमन पेपर नाम का एक पेपर होता है और वही पेपर मोस्टली ये जो थीम सॉरी ये जो पेपर क्रोमैटोग्राफी है जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, इसके अंदर यूज किया जाता है। सो दिस वॉटमन पेपर इज टेकन। इस वॉटमन पेपर के अंदर यहाँ पे वापस बॉटम लाइन में 2 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रॉ किया जाता है, जो हम जानते हैं दिस इज नथिंग बट द बेस लाइन। ओके, सो 2 सेंटीमीटर का मतलब बॉटम से 2 सेंटीमीटर का बेस लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं विद अ पेन, पेपर पेन से हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द बेस लाइन। नाउ दिस पेपर इज मेड mostly in the cylindrical format. Cylindrical format में उसे convert किया जाता है and suppose this is the container, ये हमारा कंटेनर, ठीक है। so this is what container, और इस कंटेनर के अंदर ये पेपर उसी cylindrical format में रखा है, suppose like this। इस तरीके से अब देखिएगा ये जो पेपर एक सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में, जैसे हम लोग इस तरीके से फोल्ड करते हैं पेपर, बचपन से करता है उसी तरीके से सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में रखा जाता है। और यहाँ पे तो हमने जितना देखा दिस इज द बेस लाइन। ओके, ये बेस लाइन थोड़ा सा नीचे होगा, सो ये बेस लाइन, सो दिस इज बेस लाइन। नाउ दिस इज फिल्ड विद द suitable solvent, this is filled with the suitable solvent which is called as moving phase, moving phase। ओके, नाउ इसके अंदर ये जो पेपर हमने यूज किया, इस पेपर के अंदर ये जो मूविंग फेज है, मूविंग फेज के अंदर 2 सब्सटेंस होते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक होता है वाटर। और ये जो वाटर है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, मतलब कैपिलरी एक्शन मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको हम जब किसी भी पेपर को जस्ट पानी के अंदर एक एंड उसका डुबोते हैं तो पानी उसके ऊपर आ जाता है, मतलब अप राइज होता है, उसके राइज होता है, दैट इज बिकॉज़ ऑफ द कैपिलरी एक्शन, एब्जॉर्ब होते होते ऊपर आ जाता है। सो दिस इज कैपिलरी एक्शन। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर suitable solvent है और water है, water यहाँ पे मूव करता है because of capillary action and that water which is present into the fibers of this paper, पेपर के जो फाइबर्स होते हैं, जो स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, that water is acting as a stationary phase। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर जो वाटर आएगा, वाटर जो राइज अप होगा यहाँ पे, this water will be acting as a stationary phase and this substance organic solvent is called as you can say मूविंग फेज, जो यहाँ पे मूव होने वाला। सो हमारे पास जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर के स्पॉट यहाँ पे दिए जाएंगे यूजिंग अ ड्रॉपर, ड्रॉपर करके यहाँ पे स्पॉट दिए। तो हमारे पास मोनो सब्सटेंस ए, उसका स्पॉट यहाँ पे दिया, सब्सटेंस बी है, उसका स्पॉट यहाँ पे दिया, बेस लाइन पे दिए दोनों स्पॉट। तो देयर इज अ सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी, हमने उसका यहाँ पे दिया और ये एसिड हमने इसके अंदर रख दिया। जैसे हम इसके अंदर रख देंगे, ये जो मूविंग फेज है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इट विल मूव और इट विल राइज इन द पेपर बिकॉज़ ऑफ कैपिलरी एक्शन, ये ऐसा मूव करता है। सो मूव करते करते नाउ दिस इज द सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट यहां तक चला जाता है। सो दिस इज यू कैन से सॉल्वेंट फ्रंट, दिस इज सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट यहां तक चला गया और ये जो स्पॉट है वो अलग अलग जगह जाता है। सपोज एक स्पॉट यहाँ पे चला जाता है और हो सकता है दूसरा स्पॉट यहाँ पे चला जाए। दूसरा, अभी हम लोग ऐसा मानते हैं कि मानो हमारे पास सिंगल सब्सटेंस है और उस सिंगल सब्सटेंस को हम लोग
मूव कर रहा है। तो होता क्या है कि ये सिंगल सब्सटेंस जो हमने यहाँ पे उसका ड्रॉप दिया था वो यहाँ तक मूव करता है, एंड दिस इज नथिंग बट यू कैन से जिसे हम लोग कहते हैं हमारा सब्सटेंस फ्रंट। सब्सटेंस जो भी है, व्हाट इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस वी हैव गिवन, वो सब्सटेंस का फ्रंट यहाँ होता है। नाउ ये देखेंगे हम लोग, तो दिस इज द बेस लाइन। बेस लाइन से यहाँ तक देखते हैं, दिस इज यू कैन से फैक्टर y, and this is the movement of this substance is called as a factor x। दो होता है, तो एक हुआ सॉल्वेंट बेस लाइन से कहां तक मूव किया, दैट इज डिनोटेड बाय y, और हमारा जो सब्सटेंस है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो हमने ड्रॉप दिया था यहाँ पे, वो ड्रॉप कितना मूव किया, दैट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x। So distance traveled by the substance is denoted by x, and distance traveled by the solvent front, that's called moving phase, is denoted by y. And then here, retention factor R is calculated. So there is RF. This is called a retention factor. Retention factor is nothing but the distance traveled by substance, organic substance, upon distance traveled by that is you can say solvent front or solvent. So RF factor is x upon y. This is the factor. By knowing the RF factor, we can find out the capacity of partitioning of the substance. Substance का जो partitioning होता है, that is between the water and the moving phase solvent. इसके अंदर दो चीजों में उसका partitioning होता है। एक होता है इस पेपर के अंदर जो फंसा हुआ वाटर which is acting as a stationary phase, और दूसरा ये moving phase। तो दोनों के बीच में partitioning होता है। By knowing this retention factor, we can find out the partitioning between them, and every substance has its specific value for this partitioning, and by which we can know qualitatively which substance is present in that one. जिस तरीके से हर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर सब्सटेंस का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जो अपना होता है, उसी तरीके से हर एक का एक आरएफ फैक्टर होता है, हर सब्सटेंस का एक आरएफ फैक्टर होता है। तो हम इस पेपर क्रोमेटोग्राफी से उसका आरएफ फैक्टर निकालते हैं, और आरएफ फैक्टर पता होने के बाद हम सब्सटेंस बता सकते हैं कि दिस इज द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस, बिकॉज़ हर एक का आरएफ फैक्टर फिक्स होता है। और आरएफ फैक्टर क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, सब्सटेंस फ्रॉम द बेसलाइन divided by distance traveled by the solvent front, and this ratio is nothing but the RF factor, that is retention factor. Or once we know the retention factor, we can identify the substance, which substance is present over here in this given solution or given mixture. Qualitatively we can find out. So that's why paper chromatography is used for the qualitative analysis of the substance. So when we talk about the chromatography दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज एब्जॉर्प्शन chromatography, और दूसरा होता है पार्टीशनिंग chromatography। और इसके अंदर उसका यूज मतलब when we comes to the applications of this chromatography, उसके भी दो एप्लीकेशंस होते हैं। नंबर वन एप्लीकेशन की बात करें, that is for the qualitative analysis, and number two quantitative analysis। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस के लिए उसे यूज कर सकते हैं। When we talk about TLC, that is used for only quantitative analysis, and when it comes to a paper chromatography, it is also used for the qualitative analysis of the substances. So that is what we can say here. So this is called as a TLC. Now, when it comes to exam point of view, when we talk about the importance of this chapter in the examination, ये जो लास्ट का पार्ट है क्रोमेटोग्राफी का पार्ट, जनरली 12th में उसका कोई कंटिन्यूशन नहीं है, 12th में कोई उसके ऊपर बेस्ड कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में आज तक के एग्जाम में बहुत कम बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहां पे पूछे जाते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और सम टाइम में भी क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो उसके अंदर उसका प्रिंसिपल भी है, डेफिनेशन भी है। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, उसका डेफिनेशन है। व्हाट इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, उसका डेफिनेशन है। व्हाट इज डिस्टिलेशन, उसका डेफिनेशन है। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसका डेफिनेशन है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उस तरीके से हमें लर्न करने हैं, समझने हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सिर्फ हमें समझना है। इसके अंदर इसका ज्यादा आज तक इसमें बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे गए इसके ऊपर, दैट इज यू कैन से कॉलम क्रोमेटोग्राफी हुआ है, पेपर क्रोमेटोग्राफी उसके ऊपर पूछे गए। सो वो चॉइस आपका होता है, मतलब if you are preparing thoroughly, then we need to go thoroughly for all the chapters, or if you are preparing exam oriented one, then accordingly खास करके JEE point of view, which topic is of the most importance and all, so accordingly we have to select out the topic. So chemistry में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें
crystallization, fractional crystallization, distillation and fractional distillation, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो हमारे सामने आ जाते हैं. So understanding these concepts and learning and preparing this concept is one or important thing. Whereas just going through this topic and just knowing the technique is different. So that is what we can say regarding this chapter called as basic analytical techniques in chemistry. So once again, we'll revise what we have discussed here in the chapter. When we came across the chemistry, हम कई सारे अलग अलग टेक्निक के साथ डील करते हैं, तो एनालिसिस के कुछ टेक्निक्स होना जरूरी है. तो सबसे पहला टेक्निक हम देखते हैं सब्सटेंसेस को प्यूरिफाई करने का या सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करने का. सो प्यूरिफिकेशन एंड सब्सटेंसेस का सेपरेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला आता है फिल्ट्रेशन. जब मैंने बताया हमारे घर के अंदर हम जब वाटर आता है तो वाटर भी हम फिल्टर करते हैं. फिल्टर करने के लिए कुछ हमारे पास या तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या तो सीधा कपड़े से हम पानी को फिल्टर करता है ना. तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं. फिल्ट्रेशन अंडर रेट स्पेशल भी करते हैं. सो इट्स अ वेरी कॉमन मेथड व्हाट इज यूज्ड इन द केमिस्ट्री एज वेल एज इन हाउसहोल्ड. सेकंड इज नथिंग बट यू कैन से क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? That is the process in which a pure substance, pure solid substance is purified by dissolving it into suitable solvent, and again it is heated, concentrated, and crystallized. So the process of obtaining pure solid substance by dissolving it into the suitable solvent is what is a crystallization process. What is a fractional crystallization process? It is the process in which separation of the two or more substances by dissolving it into the suitable solvent based on difference in solubility. Based on difference in solubility is called as a fractional crystallization. What is distillation? It is the process in which a liquid is converted into its vapors. Vapors are condensed and the pure substance is obtained. That is called as a distillation process. What is fractional distillation process? Fractional distillation process is the process in which two or more liquids are separated by converting into its vapor by using the difference in their boiling point. So the substance having lower boiling point is separated first or vaporized first and condensed, and the substance having higher boiling point is separated afterwards. That is what the separation of the substances, or especially for the two liquids. Fractional distillation, even fractionating column is used. Use of fractionating column is needed if the difference between the boiling point is low or close. And if the difference between the boiling point is more, then we can use a simple distillation process. Solvent extraction is the process in which the organic substance is separated from its aqueous solution by dissolving it or mixing it with another organic substance in which the solubility is more. So the difference of solubility is used for separating organic substance from its aqueous solution, and that is nothing but the solvent extraction process. We have seen the procedure. And next is nothing but the chromatographic technique. Chromatographic technique used qualitatively and quantitatively for analyzing the substances. That is qualitative and quantitative analysis. This technique mainly consists of stationary phase and moving phase. Chromatography has different types. Mainly there are two types, that you can say adsorption chromatography and you can say here partition chromatography. Adsorption chromatography has two again, that is column chromatography and thin layer chromatography, TLC. Where there is a stationary phase and there is a moving phase. Column chromatography is used for the qualitative as well as quantitative, and TLC is used for qualitative analysis by measuring the distance traveled by the substances, or they are separated due to difference in adsorption. The principle is difference in adsorption. Or in partition chromatography, by knowing the retention factor, retention factor, we can find out the quality which substance is present in that. So that's all. That's all for this chapter called some basic analytical techniques in chemistry. Or I think so with this chapter is over, as well as the syllabus for 11th standard chemistry is also over. So tomorrow I will come up with, if you have any difficulty doubts from any of the chapter of this 11th standard book. So we'll have some interaction session for this one. So if anyone amongst us has any doubt regarding any of the chapter of physical chemistry, then tomorrow we'll be having the discussions, or even for this basic analytical techniques in chemistry. So hope you will come up with some difficulty doubts. If you have, tomorrow we'll discuss that, or otherwise we'll start with chapter for 12th standard. Thank you very much. See you tomorrow. Bye-bye.